May I come in? वो क्या इतना बड़ा? Welcome, my dear AS students, to the ASRARIA notes coaching classes. Today we are going to study Senior Zoology Intermediate Public Examination March 2024, Section 1, very short answer question, 6th BSAQ. As usual, I am going to give you 4 AS questions, out of which one will definitely be there in your upcoming board examination tomorrow. Let us see what are those questions. सबसे पहला वाला क्या है बेटा? Colostrum is very much essential for the newborn infants. Justify. Yes, colostrum is very much essential for the newborn infants. Why? Because colostrum is a first milk produced by a lactating mother just after childbirth और डिलीवरी, जिसको अपन बोलते पार्चुरेशन. क्या बोलते? पार्चुरेशन. चाइल्ड बर्थ डिलीवरी को पार्चुरेशन बोलते हैं. प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को लैक्टेशन बोलते हैं. राइट? तो कोलेस्ट्रॉम क्या है? कोलेस्ट्रॉम इज द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ए लैक्टेटिंग मदर जस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी और पार्चुरेशन. कैसा रहता बेटा है कोलेस्ट्रॉम? येलो कलर का रहता और थिक रहता, और इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए IgA इम्यूनोग्लोबुलिन रहते हैं, जो कि मदर से इन्फेंट के अंदर आते वया मिल्क, कोलेस्ट्रॉम फर्स्ट मिल्क. राइट? ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. तो कोलेस्ट्रॉम क्या कर रहा है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है. सो कोलेस्ट्रॉम इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट्स. जस्टिफाई. यस, कोलेस्ट्रॉम इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट्स. व्हाई? बिकॉज़ कोलेस्ट्रॉम इज द फर्स्ट मिल्क produced by a lactating mother just after the childbirth or delivery, known as parturition. Colostrum appears yellow in color. It is thick in nature and it contains immunoglobulin type A IgA antibodies, which is get transferred from mother to the infants through this colostrum first milk. And this type of immunity is called as natural passive immunity. It provides immunity to the newborn and it helps in preventing the infection of the newborn child. Right? ये था आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स MNPs. तो ये मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स क्या है बेटा? मैक्रोफेजेस है. दीज आर नथिंग बट मैक्रोफेजेस. राइट? मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स MNPs आर नथिंग बट मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या है बेटा? फैगोसाइटोसिस है. क्या है? फैगोसाइटोसिस माने डैमेज्ड सेल, डेड सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स को खा जाता है. राइट? प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी. डिफरेंट टाइप्स के 5-6 टाइप्स के मैक्रोफेजेस मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स है. लेकिन हमने क्या पूछा अपने क्वेश्चन में? राइट द नेम्स ऑफ एनी 4. तो अपन सिर्फ 4 लिखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. कैसा है? आपकी गाड़ी बाइक है, इंजन में ऑयल डालते तो बाइक अच्छी चलती है, सर्विसिंग अच्छी रहती है. ऑयल नहीं डाले बाइक की सर्विसिंग खराब हो जाती है. राइट? उसी तरीके से अपने बॉडी में जब तक इम्यूनिटी पावर अच्छा है, अपनी बॉडी अच्छी है, इम्यूनिटी पावर वीक हो गई अगर तो बॉडी अच्छी नहीं रहती. उसी तरीके से याद रख लो, द निमोनिक इज मैक ऑयल. आपके गाड़ी में कौन सा ऑयल डालना है अपने को? मैक ऑयल. राइट? जैसा कि कैस्ट्रोल वगैरह रहता है ना, उसी तरीके से मैक ऑयल रहता है. निमोनिक इज मैक ऑयल. क्या है भाई? एम फॉर माइक्रोग्लिया. कहां रहते माइक्रोग्लिया? इन ब्रेन. राइट? सेकंड, ए फॉर alveolar cells. alveolar cells कहां रहते बेटा? alveoli में, लंग्स में. राइट? देन के फॉर our most favorite and important cells, Kupffer cells. कहां रहते बेटा? लिवर में. Kupffer cells are present in the sinusoids of liver. Right? Then उसके बाद O for osteoclast. osteoclast cells कहां रहते बेटा? है बोन में. हो गया आपका आंसर. क्वेश्चन क्या था? राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटोसिस. मैक ऑयल. M for microglia present in the brain. A for alveolar cells present in the lungs. K for Kupffer cells present in the liver. O for osteoclast cells
present in the bone. Differentiate between parforins and granzymes. क्या है होता है? Parforins and granzymes. These are the enzymes secreted by cytotoxic T lymphocytes, also called as killer cells. Right? These are the enzymes secreted by cytotoxic T lymphocytes. Granzymes are also secreted by cytotoxic T lymphocytes. Right? What do the parforins do? These enzymes, parforins, makes pores in the cell membrane of infected cells. क्या करता बेटा parforins? They make pores in the cell membrane of infected cells. अपना ग्राइंजाइम्स क्या करता? जब parforins से pores बना देता तो ग्राइंजाइम्स enters through the pores made by parforins in the infected cell and activates enzymes such as caspases and leads to death of infected cell by the process called as apoptosis. What is apoptosis? Programmed cell death is known as apoptosis. ये था बेटा आपका क्वेश्चन. Differentiate between parforins and granzymes. Parforins are the enzymes secreted by cytotoxic T lymphocytes, also known as killer cells. Granzymes are the enzymes secreted by cytotoxic T lymphocytes or killer cells. Parforins make pores in the cell membrane of infected cells. Right? Granzymes enters into the infected cells through the pores made by the parforins and activates some enzymes such as caspases, which leads to the death of the infected cell by the process called as apoptosis. Apoptosis is nothing but programmed cell death. ये था बेटा आपका आंसर. Next question क्या है? Mention various types of immunological disorder. अब various types of immunological disorder क्या क्या है? सबसे पहली चीज acquired immunodeficiency disorder. Right? Acquired immunodeficiency disorder such as HIV/AIDS. Right? Then second वाला क्या है? autoimmune disorders. autoimmune disorders माने क्या बेटा? अपने बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज रहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, अपने सेल्फ एंटीजन को अच्छी तरीके से पहचानते. राइट? फॉरेन एंटीजन, बाहर वाले एंटीजन, माइक्रोब जैसा है, बैक्टीरिया, वायरस आया तो उसके अगेंस्ट अटैक करके, टारगेट करके किल करते, अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. लेकिन दिस इज अ कंडीशन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, वेयर आवर एंटीबॉडीज अटैक्स आवर ओन सेल्फ एंटीजन थिंकिंग इट एज ए फॉरेन एंटीजन, उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. राइट? एग्जांपल क्या है बेटा उसका? रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, अपने बॉडी के मल्टीपल जॉइंट्स पे इंफेक्शन हो जाता, रेडनेस हो जाता, पेन हो जाता. ठीक है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स. थर्ड वाला क्या है बेटा? हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर. अब हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर का एग्जांपल क्या है बेटा? एनाफिलैक्सिस. एनाफिलैक्सिस दैट इज एलर्जी. राइट? अब थोड़ों को डस्ट से एलर्जी रहती है, थोड़ों को पोलन ग्रेन से एलर्जी रहती है, थोड़ों को कोल्ड से एलर्जी रहती है. राइट? एग्जांपल, अस्थमा के पेशेंट्स को कोल्ड थिंग से एलर्जी रहती है, डस्ट, पोलन ग्रेन से एलर्जी रहती है. देन फोर्थ वाला क्या है बेटा? ग्राफ्ट रिजेक्शन. ग्राफ्ट रिजेक्शन माने क्या? सपोज किसी का लिवर खराब हो गया या किसी किडनी खराब हो गई तो क्या करते हैं अपन?
लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, फ्रॉम द डोनर टू द रिसीवर। तो रिसीवर की बॉडी डोनर के ऑर्गन को रिजेक्ट करती है, राइट, उसको बोलते हैं अपन ग्राफ्ट रिजेक्शन, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स। राइट बेटा, तो ये था आपका 6th वाला VSAQ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल असरारिया नोट्स कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में भी वीडियो लिंक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में विद द 7th VSAQ। टिल देन टेक केयर। Monster.